Hello everyone, we are discussing improvement in food resources, in which today we will talk about the type of crops. As we know that different type of crops are grown in different season, but the most common type of crops that are Kharif and Rabi crops. So in this part we will talk about the type of crops that are Kharif and Rabi crops. So let's get started. We are discussing type of crops. So, based on the season, the crops are broadly divided into two types, Kharif and Rabi crops. So, first one is Kharif crops. And the second one is Rabi crops. So, Kharif crops are those crops that are grown in the rainy season and their month are from June to October. These crops are grown in rainy season and month is from June to October. And the example of Kharif crops are paddy, pigeon pea, that is arhar dal, black gram, black and green gram are also the example of Kharif crops. Soybean, cotton, maize, etc. are the example of the Kharif crops. Now we have Rabi crops. Those crops that are grown in the month of November to April are called Rabi crops. Basically, they are grown in the winter season. Rabi crops are grown in winter season and month is November to April. And the different example of Rabi crops are wheat, gram, peas, mustard seed and linseed are different examples of Rabi crops. So on the basis of the season, the crops are broadly divided into two types, Kharif crops and Rabi crops. Kharif crops are those crops that are grown in rainy season. Month is June to October. And their example are paddy, pigeon pea, black and green gram, soybean, cotton, maize, etc. The Rabi crops are those plants that are grown in the winter season. Their month is from November to April, and the example are wheat, gram, peas, mustard seed and linseed, etc. are the example of Rabi crops. Here there is also a new term, hybridization, that is the new technique to improve the crop variety. So we will discuss this hybridization also. Hybridization. This is a new technique to
It is a new technique to improve the crop variety so that more crops can be produced on large scale. So hybridization is a new technique to improve crop variety, and it is the breeding or crossing of two genetically dissimilar plants. So hybridization, it is the breeding of two genetically dissimilar plants that gives a new variety or hybrid plants. So this hybridization is basically introduced to improve crop variety so that the crop production will be on large scale. Now this hybridization can be of three types. First one is intervarietal hybridization. The second one is the intergenera hybridization, and the third one is the interspecific hybridization. So as the name suggests, this intervarietal, this is the breeding or crossing of two different varieties of same species. However, in intergenera, it is the breeding or crossing of two different genera. As the name suggests here, genera. So breeding or crossing of two different genera takes place. However, in interspecific hybridization, it is the breeding or crossing of two different species of the same genus. So this is the three types of hybridization, and this hybridization produces or gives a different variety of cereal, pulses, vegetables and fruits. ठीक है, आज हम लोगों ने बात किया है टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में. वैसे तो हर सीज़न में क्रॉप्स होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे मोस्ट कॉमन क्रॉप्स हैं जो कि सीज़न वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दो तरह के हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स वो वैसे क्रॉप्स हैं जो रेनी सीज़न में होते हैं, जून टू अक्टूबर मंथ में ज़्यादातर इनका टाइम पीरियड है. एग्जांपल्स हैं पैडी, पिजन पी, अरहर दाल, ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, कॉटन, मेज एट्सेट्रा. जबकि रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में होते हैं, मंथ है नवंबर टू अप्रैल, और इनके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड सीड एंड लीन सीड. ठीक है, एक नया टर्म हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, जो कि एक तरीका है क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने का. क्रॉप की वैरायटी को हमें इम्प्रूव करना है, क्यों? ताकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल में हो सके और सभी को खाना पीना मिल सके. ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये ब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, बेसिकली दो अलग अलग तरह के प्लांट्स जो हैं उनको ब्रीड और क्रॉस कराने पर एक नया वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस होता है, और इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ये तीन तरह के होते हैं, इंटरवैराइटल, इंटरजेनरा और इंटरस्पेसिफिक. अगर ब्रीडिंग दो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सेम स्पेसीज़ में है तो इंटरवैराइटल कहते हैं. जब
ब्रीडिंग दो डिफरेंट जेनरा में हो तो इंटरजेनरा कहेंगे, और जब ब्रीडिंग दो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ सेम जेनस में हो तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप्स। थैंक यू।